ଭଏସ୍ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖ। ଆଣିଛ କି ସାର୍? ଆନୁ ଭଏସ୍ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବ। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ଲେଡିର ୟୁନିଟ୍ 3 ଆମେ ପଢ଼ିବା। यूनिट 1 रे ग्रांड फादर एंड ग्रांड मदर रो फिजिकल अपीयरेंस सेमान देखिबा को केमती से विषय रे चर्चा हेतिला। यूनिट 2 रे तार ग्रांड मदर ऑथर को पुष्पवंत सिंह ताना ताको केमती स्कूल जिबारे एवं अन्य प्रकार ता सहित कोऑपरेट करथला, हेल्प करथला काको ऑथर को नहीं कि स्कूल को छाड़ुला ताको प्रिपेयर करोला केमती कौन कौन दौला ये सब विषय थिला। एबे समय बदलिबा सहित रिलेशन केमती बदली जाउची बोलिबा जिंस एठी देखेछ। छोट थिला बेले पिला माने जेजमा जेजबाबा किंबा अजाय सहित जति टाइम स्पेंड करती स्कूल गला बेले स्कूल अधा टाइम नहीं जीवो तापर तो आहरी कॉलेज गला बेलू आहरी बिजी हो जाए तांको काम रे तांके केमती व्यस्त होइके रहउथिबे आउ टाइम दे पारिबेनी। तो एबे यूनिट 3 रे से कौन लिखिछि जे सिटी को तांके पळेले विलेज लाइफ रु बे सिटी लाइफ को केमते आउ जीवो से विषय रे सिटी लाइफ गले रिलेशंस केमती चेंज हो जाउछ। दैट इज द मेन टॉपिक। When my parents were comfortably settled in the city रे जतबे तांका पेरेंट्स माने रहिले they sent for us that was a turning point in our friendship. In our friendship बोले कार friendship grandmother and author रो friendship रे कुछ relations रे परिवर्तन आसला जतबे सिटी रहिले। विलेज रे क्लोज रिलेशन थिला सिटी को आइला को रिलेशन चेंज केमते हिची बोलिबाटा एबे देखा दिबो। Oh, Manimala, okay, wait and see. Kochi, when my parents were comfortably settled in the city, they sent for us that was a turning point. City was a turning point, a change in the life. Great change actually, that turning point. Although we shared the same room we were living. Okay, grandmother and author. My grandmother no longer come to school with me. Earlier, grandmother was catching his hand and taking him to the school. चल जाउथला स्कूल पंत नहीं छाड़ी आसला। एबे she is no more leaving me to the school रे नहीं क्या मत छाड़ुनी ना काहे छाड़नी why not so reason इथे अछि I used to go to an English school in a motor bus. एबे सिटी रे कोन बस रे सब पिला माने नहीं छाड़थबे स्कूल रे तेणुक ये कौन करूला स्कूल नहीं जावा का भी आवश्यक नहीं नो नीड टू रीच टू द स्कूल बिकॉज द बस वाज कमिंग टू द स्ट्रीट शी वाज टेकिंग टू द बस रे से चढ़ी पड़ जाउथला। सो दैट फ्रेंडशिप जो लॉन्ग टाइम स्पेंड करथुला ग्रैंडमदर विथ ऑथर नाउ हैज कम डाउन एबे कमी गला। एबे से किमिन जाउछ स्कूल को हाउ ही इज गोइंग आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल इन ए मोटर बस हाउ बोले in a motor bus menorita ठीक अछि। तापर बोलछि there were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the country yard of our city house. एबे सिटी हाउस रे रहचंती एबे आउ से मंदिर को जिबार फेरला को से रुटी खंड जाको कुकुर को देई आस्तला there were dogs following giving the small stall chapati बोले बासी चपाती चेरडी को रखी दउथला। एबे आउ से डॉग्स माने नांती से स्ट्रीट नाही बोलची एबे तो सिटी लाइफ को रहला ना अरे एबे ता ग्रैंडमदर कोन करची इंस्टेड ऑफ फीडिंग द डॉग मान को खाइबा बदल रे फीडिंग द स्पैरो माने घर चटिया मन को एबे से कोन करची खाइबा को दउथाउची रुटी खंड द बर्ड्स
ସ୍ପେରୋ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ଚଟିଆ, ତାକୁ ତେଲୁଗୁରେ ପିଚିକି ବୋଲିବେ। हेले एबे सिटी लाइफ रे टाइम टेबल चेंज हो गला, रिलेशन चेंज हो गला। कार पुष्पवंत सिंह रो माने ऑथर रो एंड ग्रैंडमदर। नेक्स्ट पैराग्राफ देखुची, एज इयर्स रोल्ड बाय बोले टाइम चेंजिंग, इयर्स चेंज होची। वी सा लेस ऑफ ईच अदर, आमे ईच अदर को आवश्यकता देखि पारनु। ईच अदर बोले कोन? परस्पर, ओके, वन अनदर, each other. Sometimes she continued to wake me up and get me ready to school. केतक समय रे sometimes बोला, not always. आगे विलेज रे थिला को always she used to make me ready to go to the school. एबे कोन होची? sometimes she continued to wake me up. wake up बोले कोन रे? निद्र उठे वाला। wake me up and make my ready for school. आकु स्कूल को जीवा पाए बोल के रेडी करोच। केबे केमती? when I come back, जेतोल मु स्कूल रु फेरे, I return from school, she would ask me what the teacher had taught me. She would ask me. Manimala, is the voice audible? Can you hear? Yes, Raju, when you are there. Okay. So वैसे कौन बोलची? When I come back from the school, okay, thank you. When I come back from the school, जेतो school रू मु फेरे, she was asking what the teacher had taught. आगे सिमती स्कूल रे कौन पढ़ा होची किसी से पचार नथिला, विलेज रे थिला बेलको। एबे टाउन रे किंतु से मते बस पाके छाड़ दउची, मु बस रे बस के आई एम गोइंग टू स्कूल। When I return from school, then she is asking, she would ask me what the teacher had taught me. Had पर teacher देखो, teacher भीतरी होची taught, इति अछि। teach, taught spelling मन रखता। catch, caught केबे पैसिव करबार छी, पास्ट टेंस करबार छी बेले तार फॉर्म देखितिबार छी। हेले जेतोले पचारे मते स्कूल रे कोन पढ़ा हला, तो मु कोन कहे सिटा इट लिखा अछि। व्हाट आई यूज्ड टू रिप्लाई, I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, arithmetic principles, world being around, lessons जाको। These are taught. ए स्कूल रे कौन पढ़ा होची बोले से कहूची, मु कौन कहे ताको, what shall I say? Some English words and little things around the Western science, पश्चात विज्ञान, and learning, कमा अछि, law of gravity, माध्याकर्षण शक्ति, comma अछि, arithmetic principle, means are the lessons I used to tell, and the world bring and things around the world, पृथ्वी रो अन्य विषय रे टीचिंग होची बोली कहे। This made her unhappy. से एटा सुनिकी आ खुशी हलान। She was unhappy. Why unhappy? एबे जना पड़िबो। Why unhappy? She could not help me with my lessons. से unhappy काहे कि ये lessons जतो से सुनला, साइंस lessons, इंग्लिश lessons, तार ग्रैंडमदर को इंग्लिश से तो बुझनी, तेनु करी से ताको किछि हेल्प करि पारलान, could not help me. इति मी बोली से देले तमे हिम बोली कहबो, आंसर लिखला बेलको। इति माई बोली के देले हिज बोली के लिखबा अछि, आंसर लिखला बेलको। आंसर शुड बी रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच रो लेसन जा क दैथिबो, आमे बुझेला बेलको मत इनडायरेक्ट स्पीच करबा अछि, तमे आंसर लिखला बेलको मत इनडायरेक्ट स्पीच करबा अछि। तेनु करी मी ता हिम, माई ता हिज इनथे जातो। She did not believe in the things taught at the English school. English school रे जो पाठ जाक पढ़ाउची ताई ऊपर she was not interested and she didn't believe. से believe ही करू नाही। So was distressed, बोले depressed or disturbed. से गुड प्रकार डिस्टर्ब हो जातला। ए स्कूल रो पाठ गुडा कमति कि खाली विज्ञान विषय रे पढ़ाउची। ओके, and there was no teaching about God and scriptures. से बेसी वरीड होतला एते पाई जे ये स्कूल गुडा करे
about God and scriptures बोले पुराण ग्रंथ एगुड़ाक विषय किसी पढ़ाऊनी nothing is taught तेणुक she was distressed बोले गोटे प्रकार अपसेट दुखित फील करवाटा one day I announced I will के author I will writer बोले मन रखियो तुम माने one day writer announced that we were being given music lessons गोटे दिन एमती का मुझे कहीदेली जे ग्रांडमा आम स्कूल रे म्यूजिक लेसन दि जाऊँगी बोला तो से आहरी डिस्टर्ब है से कौन है देख सी वाज वेरी डिस्टर्ब सीटा जो से शुणिदेला सी वाज वेरी डिस्टर्ब से बेसी डिस्टर्ब हो गला ग्रांड मदर बोला म्यूजिक क्लास कौन स्कूल रे इटा तो ल्यूड मैन बेगर्स मानकर लेसन गीत गायक से भिक मागे तुम मन तो स्टूडेंट मैंने बोले से देख टू और म्यूजिक है ल्यूड एसोसिएशन बोले समाजर न्यून स्तर लोक मान ल्यूड बोली कहे लोअर कैडर लोक मैंने ये करेंगे तुमको कहीं दि जाऊँगी इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स नॉट मेंट फॉर जेंटल फ्लॉक ये म्यूजिक लेसन टा जेंटल फ्लॉक पाई ना इटा बेगर्स मान हार्लट्स मान हार्लट्स बोले किए जे कोठारे जो नाच करते लेडीज मैंने क्लब भाया थी से सीना गीत तुमको कौन म्यूजिक लेसन इज गिवन इट इज वेरी बोरिंग इट्स वेरी बैड बोल कि सी कौन कर अनहैप्पी अच्छी डिस्टर्बड अच्छी डिस्ट्रेस्ड अच्छी तीन टा पद आइला फर्स्ट लाइन रे फर्स्ट राउंड रे आसला व्हाई सी वाज अनहैप्पी कहीं बोले से लेसन्स ऑफ साइंस एंड लर्निंग लॉ ऑफ ग्रेविटी आर्थमेटिक प्रिंसिपल्स ए लेसन जाक सब कहूँ साइंस रो सब इंग्लिश मीडियम रे कहूँ बोल अनहैप्पी तापर डिस्ट्रेस्ड कहीं गॉड एंड स्क्रिप्चर विषय पढ़ा जाऊनी बोल कि तो डिस्ट्रेस्ड गोटे पद गला तापर आइला डिस्टर्बड म्यूजिक पाई बोल कि म्यूजिक पढ़ाऊँ बोल कि डिस्टर्बड सो तीन टा वर्ड हिसाब से तीन टा क्वेश्चन तुम्हें मन रखा अच्छा जेंटल फ्लॉक रो लेसन नहीं म्यूजिक टा हाउ इट इज टॉट टू यू बोल सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल से किसी कहला नहीं ये ग्रैंड मदर दैट मीन्स इटा तार डिसअप्रूवल सी खुशी नहीं आई रे सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट एति सुनदेला पर स्कूल रे ये लेसन्स पढ़ा जाउची बोल कि ओके से आस्त कथा हबार कमे देला रेयरली टॉक्ड रेयरली होची एडवर्ब रेयरली बोले कौन केबे केमती कथा हवाटा आउ फ्रिक्वेंटली सेते ता सहित रिलेशन रहिलानी हेल तमे भी कौन देखिलो विलेज लाइफ रे जते क्लोजनेस थिला ग्रैंडसन आ ग्रैंड मदर सिटी लाइफ काइला को सीटा धीरे धीरे डिस्टेंस हो गला एबे आउ से एक तो से तार इंग्लिश मीडियम स्कूल रो लेसन गुड को डिसअप्रूवल करछि दुई रे आसे तो तार कांटेक्ट मध्ये कोन हैला लेस हैला when I went to university next paragraph the last paragraph I wrote तीनटा तो पैराग्राफ अछि न दुईटा छै 1 2 3 yes when I went to university तापर से बे हायर एजुकेशन को जीवो सिटी लाइफ रू से जो हायर एजुकेशन को जीवो यूनिवर्सिटी रे पढ़िबो हमर एजुकेशन कोन इंटीग्रेटेड बोली कहबे यूपी स्कूल तापर मिडिल स्कूल तापर हाई स्कूल तापर कॉलेज कॉलेज तो अधिक हो गेले यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रेंज इन देखियो वाला हेले ए भी बड़ हो गेला काहे वेंट टू यूनिवर्सिटी बोलची आई वाज गिवन ए रूम मु यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हला बेले मो पाए गोटे सेपरेट रूम हला फॉर माय ओन बोले निज पाए द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड छड़े नहीं गेले बेला बनावे जेति की कॉमन लिंक आउट के रिलेशन थिला जेजमा सहित ग्रैंड मदर सहित सेटा बे आउट डिस्टेंस हो गेला My grandmother accepted her seclusion from resignation. बोले से ग्रैंडमदर मध्य आमठू सिक्युलेशन बोले कौन सेपरेट रहा पाई प्रिफर कला सिक्युलेशन मीन्स कीप समवन अवे फ्रॉम समथिंग और समबडी सेपरेशन सेपरेट है कि एकुटिया रहा से भलो
प्रिफेर करुला तेणु करिका सी रेयरली टॉक केबे केमते कथा होतला रेयरली बहुत विरल सिमती रेयरली आउथर आइला सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील आजिकल से समय कटोची स्पिनिंग मशीन थी माने लुगा सूता कटा मशीन ताइरे ये कौन कर बेसी टाइम स्पेंड कर तार गोटे रूम थी से रूम भर पलैब ये दुईटा वे टाइम स्पेंड कर गोटे हूँ स्पिनिंग व्हील चलैकी से सूता जो अरक भाया अरक ना कौन बोलिए सेकेंड हूँ कौन भोजन बा जप कर साइटिंग द नेम ऑफ द गॉड रिसाइटिंग टू थिंग्स तेणु से रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक एनीवन का सहित कथा हाँपाई से टाइम स्पेंड करे ना से मेसीन रे लगी स्पिनिंग व्हील रे ओके फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सूर्य उदय रु सूर्य अस्त पर्यंत सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर सेकंड कामटा कौन रिसाइटिंग प्रेयर रिसाइटिंग बोले जप करवा रिसाइटिंग प्रेयर को रिपीट कर से गाउथब सो दीज आर द टू टास्क्स नेक्स्ट आउ गोटे टास्क से हाउ सी इज पासिंग हर टाइम ए पैराग्राफ रे अच्छी द ग्रैंड मदर तो गोटे है स्पेंडिंग टाइम द व्हील स्पिनिंग रे आउ गोटे है रिसाइटिंग प्रेयर और थर्ड टा कौन देख फीडिंग द स्पैरोस स्पैरो माने घर चटिया मान खाइबा को दउथबो तो ता विषय तो आइला ओनली इन द आफ्टरनून सीटा केतबेले सी वाज फीडिंग द स्पैरोस आफ्टरनून रे खरा बेले सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोस व्हाइल फीडिंग द स्पैरोस से टिके रिलैक्स होतला लाइफ तार दिन जाक भितर ताको एंजॉयबल पीरियड कोटा बेले खाली से स्पैरो मान को खोएबा समय से टिके निजको रिलैक्स करथला while she sat in the veranda breaking the bread into little bits hundreds of little birds collected around her creating a veritable bedlam माने गोटे कंफ्यूज वेरियस वॉइस रे साउंड क्रिएट करथले चिपिंग साउंड बोलिबे ताको पहले से बार्ड्स चिं चिं करथबे ना दैट वाज तो एक्चुअली ये कौन करथला बारंडा रे रोटी मन को ब्रेड माने कौन रोटी मन को ब्रेक करके छोट छोट खंड करके दउथला small small pieces of bread she was giving to the sparrows and the birds come and sit on her head and sit around the old woman and they create sound केमती veritable bedlam of chirping से चिं साउंड ऑफ द birds चारिकानी परिपूर्ण होके रहतला some come and porch बल बसतले preach on her leg आउ के आस की शोल्डर बोले कांधर बस पड़तले some even set on her head ता मुंड पर मत के चढ़े मन बस पड़तले स्पैरो जाको से तांको रागु नथला she smiled but never showed them away showed माने घोड़ नथला should means it not to avoid them तांको मन के अवॉइड कर नथला I used to be the happiest. It used to be the happiest half hour of the day for her. ये अध घंटा का तार जीवन रो ताको से डिस्क्राइब करूचे जे happiest hour of the day. Which is the happiest hour of the day? This half an hour in which half an hour she was feeding the sparrows. Sparrow मानन को feeding करतला खाइबा को दउतला सेटा अब तार हैप्पीएस्ट पीरियड थिला आ स्कूल विषय तो से अनहैप्पी टीचिंग विषय तो से अनहैप्पी आ कोटी डिस्ट्रेस्ड तो आ कोटी डिस्टर्बड हम देखिले नाउ सी द क्वेश्चंस कोन देछि व्हाई डिड नॉट ग्रैंडमदर accompany the writer to school in the city accompany बोले ताको कंपनी दो पानतला संगरे जाई पारनतला काहेकि हां बिकॉज़ ही वाज गोइंग इन दिस मोटर बस से खंडटा हो मोटर बस रे से जाउतला तन तक बस पंद नहीं छाड़ दउतला
स्कूल पर्यंत ताको आकम्पानी करनथला आकम्पानी बोले सांगरे जीवाटा तेणु पद मन रख से हिसाब से आंसर लिख पार आ सब क्वेश्चन देख डिड नॉट कुड नॉट डिड डू वाज अच्छी पास्ट टेंस ना तो आंसर शुड बी रिटन इन द पास्ट टेंस व्हाई कुड नॉट ग्रैंडमदर हेल्प द इंग्लिश राइटर विथ लेसन्स एट सिटी स्कूल रे ग्रैंडमदर ऑथर को कहीं हेल्प कर पार नथला लेसन्स रे because everything was taught to them in English medium and grandmother was not proficient in English. She English रे तक knowledge नथिला. Why did the lessons at the school distress? देखो ये distress बोल दला ना distress कहीं के होती सीट काट के दबो एपट साइड होती 71 पेज कौन पाइन distressed बोले nothing was taught about the God and scripture. God and scripture विषय कुछ पढ़ा so she was disturbed. Our next question is why was she disturbed for the music lesson? Music lesson ta kain se disturb होला because it is the lesson of the lewd association. Our harlots and beggars माने a lesson follow करंतु को पाकर अछि त मन मान पड़तो आंसर एबे लिखिबो ऑनलाइन क्लास क्लोज कर देबी आउ टिके देखिबा कोन ग्रामर. What were the 3 ways in which grandmother spent? मु तीनटा जाक वे कहितली 3 ways that the grandmother spent her time. कौन एक spinning wheel, 2 reciting prayer, 3 feeding the sparrows. So 3 ways सेठी आइला. एटी गोटे कथा अछि used to बेस्तर होइछि देखो लास्ट सेंटेंस I used to और प्रेजेंट वर्ब आइबो पास्ट हैबिचुअल एक्शन रे used to हबो used to रे केतरा सेंटेंस करो बोले काई गोटे सेंटेंस कहल रे अतुल used to represents past habitual action. So can you tell about your past habitual action? अतीत रे गोटे काम लॉन्ग टाइम पे कोन करथलो कोन करथु बोलवाटा Pardon? Used to help. Okay, ठीक अछि. काक हेल्प करथलो बोलु? Oh, used to help the relatives. Right. You make a sentence. ठीक हो? Used to रे. In closing, Manimala, take rest now. Do the question answers at home. Used to पर verb ले दो. I used to help my grandmother. Help like that. Verb we have to add. used to पर verb आसीबा छै जो verb रो मीनिंग जोटा थिबो सेटा तो रेगुलरली करथुलु पास्ट रे बोल की जणा पड़िबो. दुईटा सेंटेंस एठी भी अछि फर्स्ट पैराग्राफ रे I used to go to an English school बोल के अछि देखलो सब बेले से जाउथला रिपीटेडली हैबिचुअल एक्शन हले ताको used to रो प्रयोग करा जाय अतीत सब बेले करथवाटा देखो गुड काम करो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3टा लेके देखो टाइम देले 4-5 करिवो आंसर तुम कोई देले कोठी अछि ए कंपनी मींस कोन जानलो ना कंपनी दवा टू द एंड ओके